Hello, my dear students. It's exactly 4 o'clock. So we're going to start the class now. So before starting the class, I'm going to ask you a very basic question. Just let me know if I'm perfectly audible and visible or not. Okay, just to check the technical glitches if there are any. Okay, I'm going to launch the poll. It's exactly 4 o'clock. So we're going to start the class now. So before starting the Okay, I'm audible and visible. Great. All right. Okay, great. I'm audible and both visible, right? And the screen is also visible, so there are no any problems. I'm going to end the poll. So yes, I hope all of you have done your EIT test very beautifully. Okay, so I hope there are no problems with the test which you had done. All right. So if you have any, you can watch the video made by us, the solution video. You will have the clear understanding of whichever questions you feel as difficult. Okay. So chalo, I'll end the poll then. Great. We're going to start the class. As you know, we have already completed plant kingdom and animal kingdom. We are going to do it today. So after this weekend, in the next weekend, we're going to start the morphology of the flowering plants. Okay. So in this weekend, we're going to solve animal kingdom questions both today and tomorrow. Okay. So make sure that you read and come before, attending the class. Okay. It will be helpful for your basic understanding. Clear? Okay, then we are going to start the class. So there's a first question on the screen. When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, the organism is called. Okay, options are radial symmetry, bilateral symmetry, asymmetrical, metamerically segmented. Okay, so these are your options. So please make sure that you answer in the poll, which I'm going to launch now. Okay, so I'm launching the poll now. Please make sure that you answer in the poll. And for the YouTube students, please make sure that you can use the chat box. Okay, please use the chat box for answering your questions and please be active. Yes. It's a very easy question directly taken from NCERT. If you have read the NCERT, then you can easily solve this. Okay, when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, the organism is called. Okay, I have got my answers. I'm going to end the poll. चलो तो बेटा आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? What you're going to see here? Okay, so we'll see here now. There are two main types of symmetry, okay, and there's a third symmetry which we call as asymmetrical. You can take the example of porphyrins like sponges. Sponges are asymmetrical. They don't have a perfect symmetry. Okay, either you can cut them equal halves through a vertical plane, lateral plane, sagittal plane. अब जैसे भी cut करो आपको equal halves मिलेंगे ही नहीं. Okay, so they are asymmetrical. Apart from those, you will be studying two types of symmetry: radial symmetry and bilateral symmetry. Okay, so what do you study in radial symmetry? This type of symmetry generates identical body halves around the central axis. Because central axis ke surrounding pe you are going to get the identical body halves. Okay, so that you need to remember. And in the bilateral symmetry generates only two sides as left and right side along the sagittal plane. Okay, जब आप bilateral symmetry में, okay, if you see here, you are going to get the two sides. So one is left and right, but that is not the case in radial symmetry. Okay, radial symmetry में आपको दो से ज्यादा भी halves मिल सकते हैं, but that might be equal. वो equal होते हैं, but यहाँ पे only two. Bi, the letter, the word indicates bilateral. Left and side की symmetry होती है, that is bilateral. Okay. Now here, body cannot be divided into left and right side in the radial, but it can be divided in the bilateral symmetry. Okay, so similar type of body parts are arranged in the regular manner around the central axis. That is in the case of radial symmetry. Here, similar body parts are arranged in both sides because दो ही sides हैं, left and right. So in both the sides, it is arranged equally. All right, so that you need to remember. And examples are sea urchin, sea anemone, jellyfish, starfish. Here humans, okay. A great example to remember is humans for bilateral and these jellyfishes. Okay, you can take an example of jellyfishes, okay, or sea anemone. These are the best examples for
radial symmetry. Okay, so here now you can answer. So this statement is directly from NCERT, taken from NCERT. So the option is radially symmetrical. Bilateral में दो halves मिलते हैं, left and right, which is not the case here. And asymmetrically, as I have told you, these are sponges. Metamerically segmented, this you will be seeing in segmented, okay, organisms. Can anybody tell me which are the segmented organisms according to you given in your NCERT? Segmented organisms, metamerically segmented. Yes. Metamerically segmented. Oh my God. Is this chapter completed in your classes? I hope this is completed. Okay, complete ho gaya hai, but still you have not get the grasp of this chapter. Okay, तो बेटा आप अनेलिडा देख सकते हो. ओके, सो अनेलिडा आप देख सकते हो, वहां पे आपको मेटामेरिकली सेगमेंटेड पार्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलो वी आर गोइंग टू मूव अहेड देन. So there is a next question on the screen. Dash is responsible for maintaining the current of water in sponge. Okay, please read the question carefully and then answer. Dash is responsible for maintaining the current of water in sponge. Options are osculum, porocytes, spongocyte, and choanocytes. Okay, so I'm going to launch the poll now. Please make sure that you answer in the poll. All right. Okay. So I have launched the poll, my dear students. Please make sure that you answer here. Okay. All right. So I'm going to stop the poll now because I have got my enough answers here. So here you will be seeing Dash is responsible for maintaining the water current in sponges. You will see here, okay, so this is the main body, okay, this is a sponge, okay, we are talking about sponges here, this is a sponge, and here in this sponge, you will be seeing very small pore-like structures, okay, we call them as ostia. Okay, we call them as ostia. Through these ostia, the water will be going inside the body and there will be central cavity. Okay, there will be a central cavity. We call it as spongocoel. You can see here. Okay, that cavity is spongocoel, and through the spongocoel, the water will be going out of the body through this big opening. Okay, big mouth opening, that is osculum. Okay, that is osculum. ठीक है, यहाँ पे लिखा है osculum. So now this is the फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से हो रहा है? ऑस्टिया में जाएगा, फिर सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियल, देन ऑस्कुलम एंड देन आउटसाइड. दिस इज द फ्लो. बट व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट. ओके, जो वाटर तो आ रहा है जा रहा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है बेटा क्वानोसाइट्स. Okay, if you're wondering what are choanocytes, these choanocytes are the flagellated cells which are present in the internal lining of sponges. Okay, तो यहाँ पे देख लो बेटा, ये internal lining है, मतलब this is the inside वाला lining towards the spongocoel facing, and this is the outside lining. तो यहाँ पे inside में आपको मिलेंगे कुछ cells, we call them as choanocytes, and these are also called as collar cells. These are flagellated cells. You can see the flagella here, right? So these flagella cells are help in the maintaining of water flow. ठीक है, जैसे अभी पानी की जरूरत है तो flagella ऐसे laterally move करता है ताकि maintain करे पानी. Okay, if the water needs to be thrown out of the body, okay, then flagella will be moving as according to that condition. ठीक है, जैसे अभी flagella move कर रहा है कि पानी बाहर जाए या फिर पानी retain करे, कितना maintain करे, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना बाहर डालना चाहिए, कितना अंदर लेना चाहिए. All of these are decided by these choanocytes with their flagella on them. Okay, so please do remember about this. And this ostia, okay, that means pores are created by porocytes. Here we will be seeing the porocytes. Okay, तो ये बेटा कहते हैं इनको porocytes. ठीक है, so this much you need to remember. इतना याद रखोगे तो काफी है. Please do remember choanocytes. So here you will be seeing now Dash is responsible for maintaining the current of water in the sponge, that is choanocyte.
ओके, तो आप बेटा अग्री करो कि पोरोसाइट्स या फिर ऑस्टिया से अंदर तो जाएगा पानी. ओके, वाटर विल बी गोइंग इनसाइड, इट विल बी स्टेइंग इन द स्पॉन्जोसील, एंड देन थ्रू दैट स्पॉन्जोसील water will be taken out of the body through osculum. But for the maintenance, that is going to be done by choanocytes. Okay, I hope this is clear to you all. Okay, now we'll be going to the next question. Few cnidarians, like corals, have a skeleton composed of. Very simple question. Very simple question. Please make sure that you answer. Everyone must answer this question. Okay. So few cnidarians, like corals, have a skeleton composed of what? Yes. I'm going to launch the poll now. All right. I have launched it now. Please make sure that you answer in the poll. Okay. Yes. Great. All of your answers are correct. Okay, जितने भी बच्चे जूम में हैं सारे बच्चों का करेक्ट है आंसर. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. रियली आई अप्रिशिएट इट. ठीक है, चलो. So what is the question here? Few cnidarians, like corals, have skeleton composed of what? हम सबको पता है इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट है. But let us see the solution. What solution has to say? Cnidarians are those group of organisms who are aquatic, usually marine, sessile or free swimming. देखो बेटा, प्लीज डोंट कंफ्यूज्ड विद दिस वर्ड sessile. अगर आप प्लांट्स में पढ़ रहे हो sessile, तो इसका मतलब है दिस इज अ लीफ विदाउट द पीटियोल. ओके, यूजुअली कैसे होता है बेटा लीफ? अ लीफ वुड बी लाइक दिस, right? So this leaf has a leaf base and it will be having a stalk like structure called petiole. Okay, so this is petiole. तो अगर किसी प्लांट में petiole नहीं है, so we call it as sessile. This in the case of plants. But when we are talking about animals, the sessile word refers to, okay, that is a non-motile condition. Okay, that is a non-motile condition. ये मूव नहीं कर सकता. ओके, वन कैन नॉट मूव और अनदर वन इज इट कैन मूव. तो वहीं पे लिखा है यहाँ पे सम ऑर्गेनिजम्स आर sessile एंड सम आर फ्री स्विमिंग. ओके, एंड ऑल्सो दे आर रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स. ओके, एंड व्हाट दे हैव स्पेशल, उनके पास ऐसा कोई स्पेशल चीज है बेटा, वो क्या है देखते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग कैप्सूल और निमैटोसाइट्स. ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमैटोसाइट्स और द स्पेशल कैरेक्टर्स दैट यू आर गोइंग टू सी इन cnidarians. ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे. तो बॉडी में उनके जो टेंटिकल्स होते हैं बेटा, तो उन टेंटिकल्स में अरेंज्ड होते हैं दिस निमैटोसाइट्स, एंड दैट structure will be helpful for that organism for anchorage, that means for attachment. Okay, anchorage whenever we say, that is for attachment. defense का क्या मतलब होता है? अगर किसी प्रिडेटर ने हम पे हमला कर दिया, ओके, अटैक कर लिया, तो हमको डिफेंड करना है ना, उस ऑर्गेनिज्म से बच के निकलना है. सो दैट इज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे. अगर इसको किसी और को, ये प्रेडेटर की तरह एक्ट कर रहा है जैसा, एंड इसको प्रे के जैसा किसी और को अटैक करके उसको खाना चाह रहा है, तो दैट इज हाउ बोथ डिफेंस में एंड कैप्चर ऑफ प्रे में, दोनों में ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स बहुत ही जरूरी हैं. ओके, सो ये चीज आपने देख ली. एंड यहाँ पे क्वेश्चन है कोरल्स के बारे में. एंड द नाइडेरियंस हैव सम corals, okay, that have the skeleton composed of calcium carbonate. Okay, this we need to remember, calcium carbonate. ठीक है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड हियर, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब याद रखो. ठीक है, तो here I have shown you the structure of nematocysts. Okay, ये nematocysts है, please look at it very carefully. Okay, यहाँ पे this is nidocyte, ये पूरा सेल है. Okay, तो सेल के अंदर यहाँ पे nematocyst है. Okay, so this cup-like structure is nematocyst, and inside this we will be seeing a lid. ठीक है, यहाँ पे मतलब ढक्कन जैसा कुछ lid है. Okay, so whenever it wants to attack, all right, so the lid will open and eventually the barb will come out. So this is the barb, can you see? Okay, these are the barb, this spiny kind of structures present on the very thread like structure. Okay, thread like structure है, उसके ऊपर sharp type के barbs होते हैं. तो ये barb जैसे बाहर आएगा, तो it will be sticking or stinging on the prey.
ओके, तो प्रे के ऊपर जब भी स्टिंग करेगा तो देन व्हाट हैपेंस इट विल हेल्प इन द अटैचमेंट. अब जैसे फर्म अटैचमेंट हो गया तो इट विल इजेक्ट इट्स वेनम. ओके, जहर बाहर डालता है. Okay, venom will be ejected out, and here you can see slowly the barbs will be going out. Eventually venom will be ejected to the predator. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा लिया है, जैसे समझ लो मैंने और ले लूंगी एग्जाम्पल ऑरेलिया का, जेलीफिश. ओके, ये जेलीफिश का टेंटिकल है. This is the tentacle of jellyfish, and on the tentacles you will be seeing this nematocyst. ठीक है, पहले ये क्या करेगा, ऐसा लिड ओपन करेगा. देखो, दिस इज लिड. लिड ओपन हो गया, ये बाहर आएगा बार, एंड हियर इट विल बी शोइंग. ओके, ऐसे बाहर आके यहाँ पे स्टिक कर जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे स्टिक करने के लिए, एंड यहाँ से ये इंजेक्ट करेगा. ओके, पाइप लाइक स्ट्रक्चर विल बी गोइंग आउट, एंड देन इवेंचुअली यहाँ पे दिख रहा है आपको येलो कलर का वेनम बाहर निकल रहा है. सो दिस इज हाउ वेनम इज इजेक्टेड. ऑलराइट, तो देखो पहले ये अटैचमेंट हो रहा है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ओके, ओपनिंग ऑफ लिड, यहाँ पे लिड ओपन हो गया, एंड दिस बार्ब्स आर कमिंग आउट, एंड इवेंचुअली इट हेल्प्स इन द पोकिंग. आफ्टर पोकिंग ये जो स्ट्रक्चर है ये जाके बाइंड कर जाएगा प्रेडेटर के साथ, और प्रे के साथ, दोनों में हो सकता है. ओके, एंड देन यू विल बी सीइंग द venom will be ejected out. ठीक है, so this is how the nematocysts help the cnidarians for the anchorage, defense and capture of prey. Okay, so that's all. So here you are clearly seeing calcium carbonate is the answer. Okay, so going to the next question, which of the following is a freshwater sponge? Okay, so you have to tell me which is the freshwater sponge here. Okay, I know all of my students will be able to answer it very beautifully. I'm going to launch the poll. Please make sure that you answer in the poll. Okay, I have launched the poll. Please make sure everyone answer in the poll so that I'll get the idea how many of you are catching the concepts. All right, I have launched the poll. Yes, YouTube students can write their answers on the chat box. Chat box is there to chat. Okay, so you can write your options here at least, like A, B, C, D में कौन सा option है आप वो तो लिख सकते हो. Please make sure that you use it. Okay, make use of it. All right, I have got my answers. I have got my answers. I'm very happy to see the students are answering it so fast here. All right. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा स्पॉन्जिला. ओके, स्पॉन्जिला इज एन एग्जाम्पल फॉर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. Okay, and it belongs to family Spongilidae. Okay, and it is found in lakes and slow streams. ठीक है, तो Spongilla is the one which is fresh water. और बाकी के जो सारे हैं वो क्या है बेटा, those are marine. Okay, you can see here Euspongia is also, it is found in marine, and it has the skeleton made up of spongin fibers, which is also known as, Ka means known as, bath sponge. ठीक है, bath sponge कहते हैं बेटा इसको, जैसे स्क्रब करते हैं ना बॉडी को after applying the soap. So here some areas these Euspongia are used as sponge. Okay, तो वो हो गया Euspongia. And then Cycon is a genus of calcareous sponges. These sponges are small and have tube shaped structure with white to cream in color. ठीक है, इनके cream color का color होता है, and they have tube shaped structures. All right, so this is Cycon. And Euplectella is a genus of glass sponges. Okay, and this is very well known as Venus flower basket. ठीक है, इसका नाम है बेटा यूप्लेक्टेला, बट इसको कॉमनली वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसका अपीयरेंस ही इतना ब्यूटीफुल होता है. ओके, सो यू कैन सी दिस एज कुछ जापानीज पीपल जो है ना, अगर किसी के मैरिज में जा रहे हैं या कोई फंक्शंस में जा रहे हैं तो वो लोग ये यूप्लेक्टेला फ्लावर एज अ बास्केट, फ्लावर बास्केट देना पसंद करते हैं. ऑल्दो इट इज अ स्पॉन्ज, बट स्टिल उनका प्रेफरेंस है भाई. आपको पता है जापानीज लोग अलग ही एंगल में चलते हैं. तो यूप्लेक्टेला इज वन ऑफ द gift giving organism. All right, so here we got the answer, which is the freshwater sponge, that is Spongilla. Okay, Spongilla is the freshwater sponge, all others are marine. Okay, now fifth question, in Ctenophora the body bears a dash external rows of ciliated comb plates which help in locomotion. ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टीनोफोरा. टीनोफोरा की बात हो रही है. इसके बॉडी में बेटा कुछ एक्सटर्नल रोज होते हैं which are ciliated comb plates which helps in the locomotion. Cilia means what? A small hair like structures which helps in the locomotion. तो वो कितने हैं नंबर में, that you need to tell me.
Okay, that is what you need to choose your answer here. The body bears how many number of external rows? All right. So I'm going to launch the poll now. Okay. Oh my God, all my students have chosen it very beautifully. चलो आई एम एंडिंग द पोल देन, क्योंकि जल्दी बच्चों ने चूज कर लिया तो अब करें ही क्या, है ना? सो हियर विल बी सेइंग दीज आर टिनोफोर्स कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट एंड कूम जेलीज. ओके, सो सी वॉलनट और कूम जेलीज. कूम जेलीज आप वर्ड याद रखो, बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, सो दे हैव 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कूम प्लेट्स. ओके, तो एज दे हैव दिस कूम प्लेट्स, तो इसके लिए इनका नाम आया है कूम जेलीज. ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा. सो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8. You can even count. All right. So this is what you need to remember. They have 8 external rows and comb plates serve as organ for locomotion. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो. Here also you can count like 1 2 3 4 and 4 will be on that side. एक साइड पे 4 दिख रहा है आपको, दूसरे साइड पे भी 4 होंगे. So totally 8 external rows of ciliated comb plates. So answer is 8. Okay. So flame cells present in platyhelminthes are specialized in. ठीक है, जो फ्लेम सेल्स हैं वो किसमें स्पेशलाइज होते हैं बेटा? Okay, we are talking about platyhelminthes. What is their specialized function? I mean to ask. Okay, respiration and absorption, osmoregulation and circulation, respiration and excretion, osmoregulation and excretion. All right, so you have to choose your answer here. आपको अपना आंसर चूज करना है. I'm going to launch the poll. Better take some time. Don't hurry. Don't hurry to answer your, choose your option. Hurry nahi karna hai because we want correct answer to be chosen. All right. Okay. मैंने poll launch कर लिया है. Please make sure that you choose the option whichever you feel correct according to you. आपको लगता है कोई करेक्ट है तो वो रूल नहीं बनेगा कि हाँ भाई वही करेक्ट होगा. करेक्ट जो होना है वही होता है, बस आप गेस करो कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है. ओके. ओके, आई हैव गिवन एनफ टाइम. माय स्टूडेंट्स हैव चोजन. चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा आंसर है देखते हैं. ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थस. ठीक है, हम लोग किसकी बात करें? प्लैटीहेल्मिन्थस की. अ फ्लेम सेल इज स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल found, okay, found in the simplest freshwater invertebrates such as the flatworms. You know, right? Flatworms are nothing but platyhelminthes organisms को हम लोग बुलाते हैं flatworms. Okay. सो इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स. आपको याद रखना होता है दीज आर मेंट फॉर एक्सक्रीटरी पर्पस एंड ऑस्मो रेगुलेशन. यहाँ पे लिखा है फ्लेम सेल्स फंक्शन एज किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? देखो बेटा, जो वाटर का जो वाटर का रेगुलेशन होता है, जैसे कितना अमाउंट ऑफ वाटर हैज टू बी केप्ट इनसाइड द बॉडी, हाउ मच वाटर हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट. ठीक है, या फिर कितना इंटेक करना है, इंटेक कितना करना है, रखना कितना है, बाहर कितना डालना है. तो ये सारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, मतलब कितना डाइल्यूट करना है, कितना कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे बॉडी की कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं, तो उन हिसाब से ऑस्मो रेगुलेशन होता है. Okay, so we have kidney and these flame cells act as kidney. Okay, function एक ही है but वो kidney नहीं है. ठीक है, फ्लेम हम लोग बस comparison से पढ़ रहे हैं. Flame cell function like a kidney in osmoregulation and excretion. ठीक है, वाटर को मैनेज करता है, along with that it also removes the waste materials, that is excretion. and ये किसका काम है? फ्लेम सेल्स का काम है. फ्लेम सेल्स किसमें है? फ्लैटवर्म्स में है, that is platyhelminthes. Now, bundles of flame cells are called protonephridia. ठीक है, एक को तो फ्लेम सेल कह दिया, अगर बहुत सारे फ्लेम सेल्स मिल गए we give it or we call it as photonephridia. Okay, protonephridia, not photo, proto. ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा, एक फ्लेम सेल को यहाँ पे हमने बड़ा करके दिखाया है. अब इनको जो काफी हैं सेल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, इनको हम लोग मिला के कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया. ओके, so here you can see this is the one flame cell and we are highlighting that one flame cell. There is a presence of nucleus, cilia and some fluid. Okay, so this is a flame cell.
ठीक है. So ultimately they regulate the osmotic pressure and maintains the ionic balance. Okay, इतना आप अगर याद रखो तो काफी है. Now flame cells present in platyhelminthes are specialized in osmoregulation and excretion. Directly taken from NCERT. आपको यहाँ पे डाउट ही नहीं होना चाहिए. Okay, there should be no doubt remained here. Okay, so here what I wanted to show you here. Okay, सो यहाँ पे देख लो बेटा, आई वांटेड टू शो यू दिस इज द वन फ्लेम सेल. ठीक है, यहाँ पे एक फ्लेम सेल है, इसको हमने बड़ा करके दिखाया है. तो हियर यू विल बी सीइंग अ स्पेशलाइज्ड फायरिंग्स है, यहाँ पे फायरिंग्स है. बट हियर एज यू नो प्लैटीहेलमिंथस ऑर्गेनिजम्स हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट मीन्स व्हाट, इनके पास एक ही ओपनिंग है जिसमें से इट एक्ट्स एज अ माउथ एंड एनस बोथ. ठीक है, माउथ एनस दोनों तरीके से एक्ट करता है, तो एक ही ओपनिंग है. ओके, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक ओपनिंग एक सिस्टम है, यहीं से अंदर गया और यहीं से बाहर आ गया. ओके, बट वी ह्यूमंस वी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, वी हैव एन ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए देयर इज एन अनदर वे, दैट इज एनस इज देयर. तो इनके पास ऐसा नहीं है, एक ही ओपनिंग दोनों की तरह एक्ट करता है. दिस इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम and this pharynx has this opening. Okay, so this is what I wanted to show you in this diagram. This planaria is very beautiful, right? Okay, let's move ahead. Identify the figure with its correct name and phylum. देखते ही आप बता सकते हो. ठीक है, जो बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं क्लास में, दो स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो इजीली आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट बाय लिसनिंग टू माय क्लास. अब तक जो मैंने क्लास लिया है उसके बेसिस पे ही आप इसका आंसर कर सकते हो. ठीक है, so now I'm going to launch the poll. Please make sure, take some time, look at the diagram, read the options, and then try to answer it. Okay, I'm launching the poll here. Okay, it is launched. Okay, the poll is launched. Please make sure that you answer in the poll. Take some time, look into it, look at the diagram. कौन है ये बेचारा जो बैठा हुआ है यहाँ पे? All right. So I'm going to end the poll now. I have got my answers. कुछ सही हैं, कुछ लोग गलत हैं. देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है. So what you have to do, you have to identify the figure with its correct name and phylum. That's all. ठीक है, इसका name बताना है और phylum बताना है. Now look at the structure. It has hooks and suckers. Okay, इसके पास क्या है बेटा? Hooks है, मैं hooker लिख दी क्या, इसको hooks and suckers है. All right. तो यहाँ पे आप ये कौन से फाइलम में देखते हो बेटा? यू विल बी सीइंग दिस, यू विल बी सीइंग दिस इन प्लैटीहेलमिंथस. ठीक है, आप ये कहाँ पे देखोगे? प्लैटीहेलमिंथस में देखोगे, क्योंकि दोज एक्ट्स एज एंडोपैरासाइट्स. ठीक है, कई सारे प्लैटीहेलमिंथस तो पैरासाइट्स हैं, उनमें भी एंडोपैरासाइट्स जो इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं. ठीक है, लाइक टेपवर्म. ओके, लाइक टीनिया. ओके, जो टीनिया है, टेपवर्म है, वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इनसाइड द इंटरनल बॉडी, दैट इज एंडोपैरासाइट. ओके, तो ये इनके अंदर होता है हुक एंड सक्कर्स फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ऑलराइट, तो ये प्लैटीहेलमिंथस तो आपको पता चल गया. और ये ऑर्गेनिज्म कौन सा ये है बेटा? टेपवर्म. ओके, टीनिया, टेपवर्म इज द ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे आप देख लो, साइकॉन बिलोंग्स टू पॉलीफेरा. यस, दैट इज करेक्ट, बट फिगर में तो साइकॉन नहीं है. Aurelia is a jellyfish. Please do remember. Okay, ये jellyfish है. It belongs to Coelenterata, but diagram तो कुछ और ही बता रहा है. Pleurobrachia, Ctenophora, ये भी नहीं है. So answer is D, tapeworm platyhelminthes. You can see here the figure given is tapeworm. Tapeworm belongs to phylum Platyhelminthes, and the body is flattened dorsiventrally from top to bottom. Dorsiventrally flattened है. ठीक है, आप कैसे देखो बेटा? ऐसे डॉर्सल रीजन से भी देखो, वेंट्रल रीजन से भी देखो, इट इज कंप्लीटली फ्लैटेंड, ऐसे चिपका हुआ स्ट्रक्चर होता है. एंड बिकॉज दीज हैव दिस फ्लैटेंड बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स. मैंने बोला था ना, प्लैटीहेलमिंथस को हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं. तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, तो इनका नाम फ्लैटवर्म्स निकल गया. ठीक है, सो दे माइट बी फ्री लिविंग और पैरासाइट, आई टोल्ड यू. तो जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनके पास हुक एंड सक्कर्स होते हैं, दैट इज मेंट फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the organisms. ठीक है, now चलो, refer the given figure ABCD and identify the option which shows their correct name. Okay, तो मैं बताऊंगी ना,
जिन बच्चों ने भी एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आया है, अब मेरी क्लास जो अगर उन्होंने ठीक से सुनी होगी तो उस बेसिस पे भी इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू लॉन्च द पोल नाउ. Okay, so poll is launched. Please make sure that you choose your options. Take your time. Okay, take your time. आप वक्त लो, देखो, look at the diagrams and read the options. So which one do you think is a correct one? Yes. Very good. Very good, Rajkot. Very good, Bhavnagar. Great. All right, then I'll end the poll क्योंकि सारे बच्चों ने आंसर चूज कर लिया है and half of them are correct and कुछ लोग गलत हैं. देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. All right. So here you will be seeing, okay, here you will be seeing, this is Aurelia. Okay, ये जो है बेटा ये Aurelia है. This is Aurelia and this is Adamsa. Okay, Adamsia. तो बेटा ये पॉलिप एंड मेड्यूसा के स्टेजेस हैं. ओके, पॉलिप एंड मेड्यूसा के स्टेजेस हैं यहाँ पे ओरेलिया एंड एडाम्सा, वो आपको याद रखना है. एंड दिस इज नाइडोब्लास्ट. ओके, जिसमें निमैटोसिस्ट है, मैंने बताया ना ये जो निमैटोसिस्ट है ये नाइडोब्लास्ट है. ओके, सो नाइडोब्लास्ट आपको याद रखना है. एंड डी इज प्लूरोब्रैकिया. ओके, दिस इज प्लूरोब्रैकिया फ्रॉम टीनोफोरा. तो अब यहाँ पे देख लो, आप ऑरेलिया देखोगे तो सारे आप कैंसिल कर दोगे क्योंकि ऑरेलिया ही अगर आपको एक पता है तो ऑप्शंस देखो यहाँ पे कितना इजी है ना. So here Aurelia and Adamsia are the alternation of generation. Polyp एंड मेड्यूसा आपको याद रखना है. देखो बेटा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना प्लांट किंगडम में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, वहां पे क्या होगा, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा, ठीक है, कुछ टाइम तक हैप्लॉइड रहेगा फिर गेमेटोफाइट होगा. बेटा वो केस यहाँ पे नहीं है. इन एनिमल्स इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है, ये स्टेजेस हैं, बस ये स्टेज में रहेगा फिर वो स्टेज में जाएगा, खत्म. ओके, तो यहाँ पे उससे ये आएगा फिर इससे वो जाएगा, इतना कुछ लंबा कहानी यहाँ पे नहीं है. ओके, सो प्लांट किंगडम इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ओके, वहां पे गेमेटोफाइट होता है फिर स्पोरोफाइट होता है फिर वो एक साइकिल की तरह है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. दिस इज जस्ट अ स्टेज. ओके, दिस इज पॉलिप एंड मेड्यूसा आर द स्टेजेस एंड एग्जांपल्स आर ऑरेलिया एंड एडाम्सिया. कितना इजी था, है ना. सो आंसर इज बी, ऑरेलिया, एडाम्सिया, नीडोब्लास्ट एंड प्लूरोब्रैकिया. ठीक है, तो विल मूव अहेड देन. चलो, match the characteristic feature or terms given in column 1 with the phylum to which they belongs given in column 2 and choose the correct option. Okay, so column 1 को column 2 के साथ जोड़ना है and then you have to choose the correct option here. Look at the options, beta. Look into the options. Okay, I have given some time. Now I'm going to launch the poll. Please make sure that you answer in the poll. Okay. Please look into the options and then try to answer in the poll. Okay, so most of the students have chosen their options. I'm going to end the poll then. All right, so here यहाँ पे देखो बेटा, क्वानोसाइट्स. ओके, सो दीज क्वानोसाइट्स बिलोंग टू पोरीफेरन्स, है ना. ये बेटा पोरीफेरा के साथ जाएगा, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए कि पोरीफेरा. ठीक है, तो ए को 3 दिखा रहा है यहाँ पे, देख लो ए 3, इतना तो सबको पता है. ओके, क्वानोसाइट्स आर प्रेजेंट इन पोरीफेरा. तो A3 कहाँ पे है, देखो डी में है. सो बाकी सारों में तो A3 बिल्कुल नहीं. अगर आपको एक भी पता होगा ना तो आंसर चूज करना कितना इजी है. देखो डी इज द ऑप्शन. अब नाउ यू हैव टू कंफर्म विद अदर्स. ओके, जैसे नीडोब्लास्ट है. ओके, सो नीडोब्लास्ट बिलोंग टू सीलेंटरेटा. देखो बेटा सीलेंटरेटा में बिलोंग होता है. Now, flame cells. Just now we saw, अभी हमने देखा बेटा, flame cells are present in platyhelminthes. ठीक है, platyhelminthes में होता है nephridia. ओके, जो नेफ्रीडिया है, दिस इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अनेलिडा. अनेलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया. ठीक है, देन कूम्प्लेट्स, है ना, कूम्प्लेट्स विच आर 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट फॉर द इन द टीनोफोरा फॉर लोकोमोशन, दैट इज टीनोफोरा. तो देखो एग्जैक्टली मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन, तो आंसर इज डी. ओके, सो डी इज द आंसर. हाउ सिंपल वाज इट. अगर आपको एक भी पता होगा ना तो कितना इजी है, राइट. चलो,
हियर आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको फिगर देके बेटा ऑप्शन को चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो आई एम लॉन्चिंग द पोल नाउ। लुक सो ये बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन हियर। ओके, आई हैव लॉन्च द पोल। मैंने पोल को लॉन्च कर लिया है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आंसर इन द पोल। ठीक से बैठो बेटा। देखो कि सीलोम कहाँ पे है, ट्रू सीलोम है या नहीं है, सीलोमेट है या नहीं है, ए सीलोमेट है। ओके, सो विच टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज हियर। ओके, तो आई एम एंडिंग द पोल नाउ क्योंकि सारे बच्चों ने आंसर चूज कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा कौन सा आंसर है। आइडेंटिफाई द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या चूज करना है बेटा, आपको देखना है कि किसमें सीलोम है या नहीं है, या फिर है तो किस टाइप का है। ठीक है, तो हियर विल बी सीइंग थ्री टाइप्स। द सी इज वन ए सीलोमेट। ठीक है, यहाँ पे देख लो बेटा कोई सीलोम ही नहीं है। ओके, ए सीलोमेट। सो आपको सीलोम का मतलब क्या है, सीलोम इज द स्ट्रक्चर। ओके, सो सीलोम आप कहते हो बेटा एक एम्प्टी कैविटी को। ठीक है, सो दिस इज अ कैविटी सराउंडिंग द मेसोडर्मल एरिया। ठीक है, तो मेसोडर्मल लाइनिंग को सराउंड करते हुए कैविटी होती है, दैट इज सीलोम। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेसोग्लियल सेल्स हैं ना, यहाँ पे तो कोई नहीं है। देखो, सो देयर इज नो कैविटी, दिस इज ए सीलोमेट। सी इज ए सीलोमेट। तो बी में देखो यहाँ पे कैविटी है, कैन यू लुक हियर। ओके, दिस इज कैविटी, दैट मीन्स दीज आर सीलोमेट्स, इनके पास सीलोम है। ओके, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सीलोम, दिस इज सीलोमेट। एंड हियर देयर इज अ पार्शियल सीलोम। ठीक है, यहाँ पे पार्शियली आपको सीलोम दिख रहा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। तो वो आप देख रहे हो, दिस इज सूडो सीलोम। whenever you come across the word called pseudo, that means false. Okay, false condition को हम कहते हैं सूडो। ओके, सूडो सीलोमेट मतलब ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। यहाँ पे देख लो, ए सीलोमेट तो इसको हटा दिया, बी स्यूडो सीलोमेट तो सी और डी को हटा दिया, बी इज योर आंसर। ओके, बी सूडो सीलोमेट एंड सी इज ए सीलोमेट। क्लियर, सच एन इजी क्वेश्चन ना। अब थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब थोड़ा टाइम लगेगा। टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फिगर गिवन बिलो। किस फाइलम का ऑर्गेनिज्म है नहीं दिया है, ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं दिया है। यू हैव टू find it out. Organism's name and the phylum to which it belongs and the characters, okay, features. You have to remember. So I'm giving you some time. Read the options and then I will launch the poll. Okay. So options are: it is an aquatic form. Circulatory system is of open type. It possesses parapodia for swimming. Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Okay. So statements are directly taken from NCERT. ठीक है, जो ऑप्शन में स्टेटमेंट्स है वो तो NCERT से लिए गए हैं। All right. Okay, I'm ending the poll then. I have ended the poll. So here what you are going to see, beta, this organism is nothing but Nereis. Okay, Nereis है, ये किसको belong करता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, तो aquatic annelids, ओके, हम लोग annelida की बात कर रहे हैं। aquatic annelids like Nereis has lateral appendages. lateral मतलब साइड से निकले हुए appendages. We call them as parapodia, which help in swimming. ठीक है, पैरापोडिया कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, इन द स्विमिंग। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ओके, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो इन टाइप के पाइपलाइंस में जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा या फिर ट्रैवल करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं रहता बेटा, जस्ट देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द सिस्टम, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, तो क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन है। Okay, now nephridia is plural, nephridium is a singular, which helps in osmoregulation and excretion. ठीक है,
तो बेटा हमने ये चीज और कहीं पे देखी थी, दैट इज इन द केस ऑफ platyhelminthes. We had also seen in the platyhelminthes. In the platyhelminthes, there is a presence of flame cells, which are the specialized cell perform the osmoregulation and excretion. Okay, तो यहाँ पे nephridia is present in Annelida. Okay, neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. This is also true. ठीक है, तो इनके पास lateral nerves होते हैं. All right. Now, Nereis is an aquatic form and is dioecious. ये आपको याद रखना है बेटा. In annelids, Nereis, is a dioecious. मतलब sexes are separate. Male separate organism में है, female is separate organism. But earthworms and leeches are monoecious. Earthworms and leeches have a single body consisted of two types of sex organs. दोनों ही sex organ एक ही body में है. We call them as monoecious. Example कौन से है? Earthworm and leeches. Nereis, you have to remember, it is a dioecious. Okay, तो यहाँ पे देख लो बेटा, अभी statements पे आते हैं. It is an aquatic form. Yes, it is an aquatic form. Aquatic annelida है. Closed circulatory system होना चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ पे open है, तो ये wrong है. Okay, option is wrong. Now, it possesses parapoda for swimming. Yes, lateral appendages होते हैं जिनको हम कहते हैं parapoda. Can you see here? So these are lateral appendages. We call them as parapoda. ठीक है, parapodia. चलो, तो यहाँ पे न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेड गैंग्लिया कनेक्टेड, हाँ ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, यू हैव टू चूज विच इज नॉट करेक्ट. सो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इज योर आंसर. सो बी इज योर आंसर. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. ठीक है, क्लोज्ड टाइप है ना. इन फाइलम आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू. ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे होता है इन आर्थ्रोपोडा. ओके, तो बेटा देर इज नो टाइम फॉर लॉन्चिंग द पोल, सो मैं क्या करती हूँ यहीं पे लिख देती हूँ. सो नेफ्रीडिया वी वर टॉकिंग अबाउट अनेलिडा जस्ट नाउ वी टॉक्ड अबाउट दिस. तो नेफ्रीडिया इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन दैट इज सीन इन अनेलिडा. ठीक है, सो फ्लेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ platyhelminthes, है ना. platyhelminthes हैव फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है. तो किडनी जो है बेटा, किडनी इज इन द केस ऑफ ह्यूमंस. ओके, तो आप मुझे बताओ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किन में होगा बेटा, आर्थ्रोपोडा. दैट इज योर आंसर. ओके, तो आर्थ्रोपोडा इज योर आंसर, मालफिजियन ट्यूब्यूल. सो इन फाइलम आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल. ठीक है, नाउ which of the organism among arthropoda is a living fossil. बेटा मैंने यहाँ पे ऑप्शंस हटा दिए हैं. आई वांटेड यू टू सी द डायग्राम हाउ ब्यूटीफुल इट इज. तो ऑप्शंस मैंने हटा दिया है, आपको ये बिल्कुल याद रखना चाहिए. ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू राइट द ऑप्शन इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में देखती हूँ मैं कितने बच्चे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे. तो देखो, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग आर्थ्रोपोडा इज अ लिविंग फॉसिल. तो बेटा फॉसिल क्या होता है, फॉसिल इज द स्ट्रक्चर, इज अ काइंड ऑफ बोन स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर सो मेनी ईयर्स. वो नॉर्मल फॉसिल है. जैसे डायनासोर्स हैं, कितने बिलियन ईयर्स पहले थे, वो मर गए तो उनके सारे स्केलेटन्स अंदर छिपे हुए थे सॉइल में, तो उसको हम कहते हैं फॉसिल. वी कैन एक्सट्रैक्ट इट एंड यूज इट फॉर स्टडिंग फाइलोजेनेटिक conditions. But living fossil क्या है? Living fossil is the structure which is present for many years. बहुत ही सालों से है, जिंदा है और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ है. ओके, दैट इज लिविंग फॉसिल. तो कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? सो ओनली फ्यू आर करेक्ट. लिम्यूलस. ओके, लिम्यूलस और किंग क्रैब continues to remain unchanged for past 190 million years. देखो बेटा, एवोल्यूशन नाम की चीज इस ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, अनचेंज्ड फॉर पास्ट 190 million years, hence it is called as living fossil. ठीक है, तो बिल्कुल इसने कुछ स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, बहुत बिलियन सालों से, मिलियन सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है. ठीक है, सो दिस इज लिविंग फॉसिल एंड ये अभी तक जिंदा है, आपको देखने को मिलेगा अभी. ऑलराइट, so in which of the phylum excretory organ like proboscis gland is present. अभी अभी हम लोगों ने बहुत सारे excretory structures को पढ़े हैं, but ये नया है ना. in which of the phylum you will be seeing this proboscis gland is present. Okay, I'm going to launch the poll now. Please make sure that you answer in the poll. Okay, so the poll is launched. poll launch हो गया है.
डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। बस आपको याद रखना है बेटा, यू हैव टू रिमेम्बर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, सिमेट्री कैसी है। ओके, दीज आर अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखो एनिमल किंगडम बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बेटा ये डिफिकल्ट नहीं है, बस देर आर सो मेनी थिंग्स टू रिमेम्बर, दैट्स ऑल। बस यहाँ पे याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर, आपको मेक श्योर करना है कि शॉर्ट फॉर्म में आप बना के लिखो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। Okay, continuous revision helps in the remembering of concepts. Okay, so I'm ending the poll here. So let's see the answer. So phylum Hemichordata consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. ठीक है, तो इनके पास सेल के आगे टिश्यू, टिश्यू के आगे यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑलराइट, सो दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोबास्टिक सीलोमेट एनिमल्स। ठीक है, ये इस टाइप के एनिमल्स हैं। एंड हियर एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू प्रोबिसिस ग्लैंड। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा इज अ फाइलम वेयर यू विल बी सीइंग दिस प्रोबिसिस ग्लैंड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नाउ there's a question on the screen. A file like rasping organ is present for feeding called radula. ठीक है, रैडुला एक स्ट्रक्चर है जो फीडिंग के लिए हेल्प करे। मतलब देखो रास्पिंग का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज च्यूइंग एंड ग्रीनिंग, ऐसे ऐसे ग्राइंड करके करके करते हैं ना तो खाने के टाइम पे, तो वो कहते हैं उसको रास्पिंग। ओके, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग दैट। फाइल मींस इट्स अ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है मेड फॉर चर्निंग, ग्राइंडिंग एंड ओके, तो सो दैट दे आर हेल्पफुल इन फीडिंग, तो खाने में हेल्प हो रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज radula, प्रेजेंट इन विच फाइलम। ओके, कौन से फाइलम में आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। I'm going to launch the poll now. Please make sure that you answer in the poll. आपको पोल में बेटा आंसर करना है इसका। Okay, right. I have launched the poll. Please make sure that you answer in the poll. All right. All right. I have ended the poll now. मैंने पोल को खत्म कर लिया है। तो let's look here. Okay. तो ये क्या है बेटा? What is the structure? ये है snail. Okay. तो snail belong to which phylum? कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? यस, यहाँ पे ऑप्शंस देखो आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके, ऑर्थ्रोपोडा नहीं, एकाइनोडर्मेटा नहीं, कॉर्डेटा नहीं, तो बचा कौन? मोलस्का। ओके, मोलस्का एक ही बचा है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो बेटा। सो हियर इट्स माउथ इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्नेल का माउथ है। ऑलराइट, तो इस माउथ में आपको दिखेगा कुछ शार्प ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे वो सीसॉ में होते हैं ना, वैसे ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दांत हैं, वी हैव टीथ, सिमिलरली मोलस्क और द स्नेल हैज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वी कॉल इट एज रेडुला। ओके, तो इसके माउथ में दिस ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर दोज रेडुला विच हेल्प इन द ओके रास्पिंग ऑफ फूड, तो खाने में हेल्प हो रहा है। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है बेटा? दिस इज बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। ठीक है, मोलस्का में बिलोंग करता है एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, मोलस्का। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। यू हैव 2 minutes left. If you have in, if you have any doubts, you can ask me, or else you can leave the meeting. Okay, tomorrow also we are going to solve some important questions from animal kingdom. आज तो मैंने direct taken from NCERT statements के type के questions लिए हैं. Tomorrow we'll be solving much difficult questions. So make sure you show your presence and keep reading. Okay, पढ़ के आना बेटा कल की क्लास में, ठीक है? पढ़ के आना बहुत जरूरी है. If you have any doubts, you can ask me. All right then. Okay. Thank you so much, students, for attending the class. Thank you so much. Make sure tomorrow you read and come. Okay. NCERT का सारा पढ़ के आओ Animal Kingdom. ठीक है? Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye everyone. It's exactly, yeah.